Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Gadadhara Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Hari Ram Hari Ram Hari Ram Hari Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Ram 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 Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Chaitanya Krishna Krishna Ram Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram.
Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Ram, Hare Shri Krishna Chaitanya, Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura, Krishna Krishna Ram Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Ram, Ram Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram Ram, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Hare
Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Sri Krishna Chaitanya Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Bandhare Sri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Ram Hare Ram Hare Hare, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Ram Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, 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 Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Hare. Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Ram Ram Hare Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Ram Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Ram Ram, Krishna Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Jai Jai. Hare Krishna, Krishna Hare. This is birthday today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Krishna. Ram Ram Hare Krishna, Ram Ram Hare Krishna. Krishna Krishna, Ram Ram Hare Krishna. Ram Ram Hare Krishna, Hare Ram Ram Hare Krishna, Hare Ram Ram Hare Krishna, Hare Ram Ram Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Ram Ram Hare Krishna, Hare Ram Hare Krishna, Hare Ram Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna. Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare Ram Ram
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram Ram Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Lord Bhakta Vrinda Hare Krishna Ram Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Ram Ram Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Ram Ram Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram 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 Ram
Shri Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram Ram, Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Ram 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 Hare Hare Krishna, Ram Ram Hare Krishna, Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna very much. Please accept my humble obeisances और wishes to Prabhupada. सभी भक्तों को भी मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आज भी हम परम पूज्य श्री कदम कानन स्वामी महाराज के गुणगान श्रवण करेंगे। एक प्रकार से उनका ग्लोरिफिकेशन डे भी होगा आज। तो कल और आज हमने 2 दिन हमारी रेगुलर जपा टॉक्स ना करके हमारे दोनों जपा टॉक्स के सेशन परम पूज्य श्री कदम कानन महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन के लिए रखे हैं। तो काफी भक्त आज
हमारे बीच है, जो महाराज जी से जिनका संबंध रहा है, जिनके कुछ अनुभव रहे हैं। प्राय सभी भक्त इनमें से जो बोलने वाले हैं उनके ऐसे अनुभव रहे हैं। तो 7-8 भक्त हैं, समय सीमित है हमारे पास, तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि समय की सीमा का पालन करते हुए अपने भाव को व्यक्त कीजिएगा। हम प्रारंभ करना चाहेंगे श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु और तत्पश्चात श्रीमान केशव प्रभु। तो हरि कीर्तन प्रभु, काइंडली अनम्यूट एंड स्पीक प्रभु। Hare Krishna, Prabhu. Can you hear me? यस प्रभु जी, लाउड एंड क्लियर। Okay. Jai, jai. Om Ajnanatimirandhasya Gnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Kadambakanan Swami Niti Namane. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Lokanath Swami Niti. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Srivasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare। तो परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज के संबंध में मैं 1991 की बात है, इंजीनियरिंग करके हम लोग निकले थे और भक्ति राघव स्वामी महाराज के साथ हम लोग ऊटी में एक कैंप के लिए गए थे। करीब 7-8 बॉयज थे, यूथ थे, 24 साल की उम्र थी उस समय। और वहां से जब हम वृंदावन आ रहे थे तो परम पूज्य महाराज ने हमको कुछ लेटर्स दिए थे। उसमें एक लेटर था टेम्पल प्रेसिडेंट वृंदावन के नाम। उस समय कदम कानन प्रभु थे जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे। तो महाराज ने उनके लिए लेटर दिया था। एक तोषण कृष्ण प्रभु जो जीबीसी थे वृंदावन के, उनके नाम लेटर दिया था, और एक भक्ति सिद्धांत प्रभु के नाम लेटर दिया था। तो महाराज चाहते थे कि हम लोग उन सबसे मिले, उनका संग सानिध्य प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, उनसे गृहस्थ थे, ही वाज इन वाइट, उनसे मिले थे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में। तो महाराज हम सबको मिल के बहुत ही प्रसन्न हुए थे। और महाराज के मुख से अनायास निकला कि ओ दिस वर्ल्ड इज क्रिएटिंग सो मेनी इंजीनियर्स, इतने सारे इंजीनियर्स इस पूरे संसार में जन्म ले रहे हैं, बन रहे हैं, बट सो लिटिल स्पिरिचुअल इंजीनियर्स, इतने कम स्पिरिचुअल इंजीनियर्स बन रहे हैं। और वो बात महाराज की बहुत हृदय में घर कर गई कि वास्तव में मटेरियल वर्ल्ड में इंजीनियर्स भरे हुए हैं। और उसके बाद महाराज ने इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, हम सबको प्रेम पूर्वक प्रसाद करवाया, वहाँ पे दर्शन करवाया। एक भक्त को हमारे साथ दिया जो हमको पूरा गाइड कर रहे थे। तो उस महाराज के व्यवहार ने बहुत टच किया था। उसके बाद हम सबको पता है महाराज के साथ जो अनायास दुर्घटना घटी वृंदावन धाम में। और उसके उपरांत तो हम लोग रेगुलर महाराज के कीर्तन भी सुनते रहे, महाराज के ह्यूमरस कथाएं भी सुनते रहे। तभी मैं वृंदावन में था 4 दिसंबर के दिन पिछले साल। तो एक भक्त महाराज की शिष्या वो चरणामृत डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी कृष्ण बलराम मंदिर से, जब तुलसी जो उनका तुलसी देवी का स्थान है वहां के बीच में। तो मैंने उनसे चरणामृत लिया। मैंने कहा चरणामृत किसका? बोले महाराज की, गिरिराज महाराज का चरणामृत है। I was so happy to receive that चरणामृत। मैंने सोचा महाराज कैसे हैं? She said, oh, महाराज was yesterday telling, महाराज ने कल कहा कि मैं तो वृंदावन में मरने के लिए आया था। I came to वृंदावन to die, but I'm not dying। लेकिन मैं मर तो रहा नहीं हूँ। और ये महाराज कह के बहुत जोर से हंसने लगे। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी कहा करते थे, मृत्यु सर्वहरश्यहम्, मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ हर लेंगे। तुम बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हो, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस एकत्रित कर रहे हो, क्या कुछ संसार में कर रहे हो, लेकिन मृत्यु के रूप में भगवान आएंगे और सब कुछ हर लेंगे। तो हम देखते हैं कि मृत्यु किस प्रकार से भौतिकवादी लोगों का सब कुछ हरती है, लेकिन मृत्यु के रूप में भगवान भक्त को स्वयं को अपने को प्रदान कर देते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि एक पिता अपने 2 बालकों के सामने एक बहुत भयानक मुखौटा बना के आ जाए, लगा के मुखौटा लगा के आ जाए, तो जिस बालक को नहीं पता है कि इस मुखौटे के पीछे मेरे पिता है, तो वो बालक रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, माँ को पुकारेगा, हाँ, और घबरा जाएगा। हाँ, तो वैसी अवस्था भौतिकतावादी लोगों की होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पता होता है कि इस मुखौटे के पीछे हमारे श्याम सुंदर खड़े हैं, इस मुखौटे के पीछे हमारे गिरिराज है, हमारे श्याम सुंदर है। और वो हंसता है देख करके, ओह कितने अच्छे लग रहे हो पापा, आप कितने अच्छे लग रहे हो। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं महाराज की
कि आखिर के जो कुछ महीने थे ये एक इतना इंटेंस, देवर लाइक लाइफ कोच, एक प्रकार से कोच थे, गाइडेंस के रूप में महाराज ने अपने आखिरी दिन दिवस बिताए थे। और इतना मृत्यु के प्रति निर्भीकता मैंने इससे पहले नहीं देखी। इतना मृत्यु को सहज स्वभाव में, इतना मतलब मैंने सुना था कि शास्त्र कहते हैं कि दो बातों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और दो बातें हमें कभी नहीं याद रखनी चाहिए। तो दो बातें जो हमें याद रखनी चाहिए उसमें एक बात है हरि नाम। हरि नाम प्रभु का हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए। और दूसरा, हमें मृत्यु का सदैव स्मरण रहना चाहिए। तो देख रहे थे महाराज जैसे कि मृत्यु को परस्पर देख रहे, एवरी मोमेंट ही वाज लाइक लुकिंग इन द फेस ऑफ डेथ and he was smiling. He was not fearful. He was totally like, जैसे कहते हैं ना, मृत्यु के सर पे जैसे पैर रख करके ध्रुव महाराज वैकुंठ यान में बैठ गए थे, इसी प्रकार से महाराज भी मृत्यु को एक प्रकार से जीत लिए थे। तो हम देखे पिछले जब महाराज का स्वास्थ्य बहुत गिर रहा था, तो एक दिन हमारे पास रेगुलर अपडेट्स आ रहे थे, स्वरूप दामोदर प्रभु हमको रेगुलर भेजते थे। तो हम देख रहे थे महाराज अंतःकरण में और अंतर 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 जाते जा रहे हैं, अंतरंग भाग में जैसे हृदय के जाते जा रहे हैं, लेकिन नाम प्रभु का आश्रय एक दिन भी नहीं छोड़े महाराज, आखिरी दिन तक। महाराज के शरीर छूटने से एक दिन पहले की रिपोर्ट थी कि आज महाराज का जप माला में बहुत धीरे धीरे उंगली मूव कर रही है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली हरि नाम को जप कर रहे। महाराज ने अपने पास में अपनी जपमाला रखी हुई थी, जब बैग में नहीं थी, बीड बैग में नहीं थी, लेकिन महाराज उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली उनकी उंगलियां चल रही थी और वो निरंतर जप कर रहे थे। तो महाराज ने हरि नाम का आश्रय नहीं छोड़ा। जैसा हम लोग सुन रहे थे उस दिन परम पूज्य गुरु महाराज से कि चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्व इंद्रिया नाम कृते नो जाने जय जनिता कियद अमृत कृष्ण की वर्ण द्वय। कृष्ण के वर्ण में ऐसा क्या है कि जैसे चेतना के आंगन में, हृदय के प्रांगण में जब ये प्रवेश करता है, सर्व इंद्रिया नाम, सारी इंद्रियां जो है उनको जीत लेता है, शांत कर देता है। इसी प्रकार से हम देख रहे थे महाराज जैसे जैसे शरीर छोड़ने के निकट आ रहे हैं, उनका पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के नाम प्रभु का आश्रय लिए। और सुनते हैं कैंसर में कि जब कैंसर की फाइनल अवस्था आती है तो शरीर में इतना भयावह पीड़ा होती है कि उस भक्त ने चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं महाराज एकदम शांत थे, प्रसन्न मुद्रा में थे। और इस पलायन का, इस डेस्टिनेशन का हम क्या कह सकते हैं, अपने गुरु महाराज के सानिध्य में गिरिराज महाराज का दर्शन करते हुए हरि नाम प्रभु के मध्य में हरि नाम चल रहा है, वहां पे सभी भक्त हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, और उस समय मध्य दिवस में महाराज शरीर छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले परम पूज्य पाद भुरीजन प्रभु महाराज से मिलने आए थे, और भुरीजन प्रभु जब स्वरूप दामोदर प्रभु वहां गए थे और दंडवत प्रणाम किए, तो बाद में हमें पता चला था उस मैसेज में कि महाराज जो भुरीजन प्रभु के बीच में कृष्ण और बलराम की मिडिल डे पास टाइम्स की लीलाएं का वर्णन हो रहा था, डिस्कशन चल रहा था। भगवान कृष्ण बलराम जो रमन रीति में डेली जो खेलते हैं वहां पर आकर के, उसका वर्णन चल रहा था। और रमन रीति की लीला से फिर वो लोग चैतन्य चरितामृत की लीला में चले गए थे। हम देख सकते हैं महाराज मध्याह्न में एकदम 12 बजे के करीब महाराज शरीर छोड़े। उस समय भगवान जो है गिरिराज जी में विचरण करते हैं और फिर राधा कुंड की ओर जाते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान हाथ पकड़ के महाराज को अपने साथ ले गए हैं। तो वी ऑल हैव गॉट। और ये हम जैसे कल महाराज भी कह रहे थे, इस्कॉन इज नॉट जस्ट टीचिंग आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज ऑल्सो टीचिंग आर्ट ऑफ लीविंग। हम लोगों सबको इतना इससे संबल मिलता है कि नॉट ओनली बाय परफॉर्मिंग प्योर डिवोशनल सर्विस, बाय परफॉर्मिंग बहुत सुंदर तरह से भी हम भक्ति सभी लोग संपादित करते हैं, निश्चित रूप से डेस्टिनेशन सभी अपना ऐसा सुंदर डेस्टिनेशन हम लोग, और इतना सुंदर डेस्टिनेशन यदि होगा तो फिर मृत्यु का किसको भय रहेगा। और महाराज ने कहा कुछ दिन पहले, डेथ इज द टाइम व्हेन वन सर्विस गेट्स चेंज्ड। हमारी सेवा खाली परिवर्तित होती है। और महाराज ने कहा सेवा का फल सेवा ही तो है। तो जब आपने इस जीवन में पूरी तरह से सेवा की है, तो अब आपकी प्रिपरेशन ऊंची सेवा को देने के लिए भगवान कर रहे हैं। तो ये मृत्यु जो है एक्चुअली एक सेवा के स्तर से दूसरे सेवा के स्तर में पहुंचाने का एक ट्रांजिशन है। हमारा सो डेथ इज नो प्रॉब्लम, डेथ इज नो प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ मेंटल कंकॉक्शन।
तो हमने सोचते रहते हैं कि हो मृत्यु, मृत्यु में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या सब मरना छूट जाएगा। नहीं, भगवान जो है मृत्यु के समय भक्त को एक और सुंदर सेवा में अपने साथ ले जाते हैं। तो और भी एक एपिसोड है, अगर पद्माली प्रभु अलाउ करेंगे तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग मोर। महाराज अभी कुछ दिन पहले महाराज क्लास दिए थे कार्तिक मंथ में, वृंदावन मंदिर में क्लास दिए थे, और महाराज हम सबके लिए दिशा निर्देशन भी इस पूरे 6 महीने के काल में जो महाराज वृंदावन रहे थे, रेगुलर क्लासेस कर रहे थे, रेगुलर जूम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे अपने शिष्यों को पूरे संसार के, और ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर उनका दिशा निर्देशन कर रहे थे। इवन इन दिस टाइम जब व्हेन ही इज अबाउट टू लीव हिज बॉडी, महाराज जो है उनका पूरा गाइडेंस कर रहे थे। तो महाराज ने क्लास दिया था, उसमें महाराज ने हमारे जैसे पतित जीवों के इस प्रकार से हम लोगों को मिथ्या अहंकार से हरे कृष्ण। तो महाराज ने बताया कि अपना ही उदाहरण देके महाराज बता रहे थे कि मैं जब वृंदावन में आया तो मुझे गोविंदा में सर्विस मिल गई, आई वॉज अ मैनेजर देयर, और उसके बाद में मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बन गया, और मैं फिर सबको गाइड करता था, इंस्ट्रक्ट करता था, ये करो ये करो ये करो। और फिर भगवान ने कहा अच्छा तुम बहुत बड़े वो बन रहे हो, पुनः मुशिका भवा, फिर से चूहे बन जाओ। और भगवान ने मेरे को गोली मरवा दी, और मेरे को गोली लगी, उसके बाद में 1.5 साल तक आई वॉज ऑन द बेड, पुनः मुशिका भवा बोले। और उसके बाद में जब मैं ठीक हुआ, फिर मैंने संन्यास लिया 98 में, और उसके बाद में पूरे संसार में मैंने विश्राम शुरू कर दिया, और मेरे इतने सारे शिष्य बन गए। फिर से मैं जो था वो शेर बनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भगवान ने फिर मुझे कैंसर कर दिया, अब पुनः मुशिका भवा। महाराज ये एपिसोड इतना ह्यूमरस वे में बता रहे थे, लेकिन इतना बड़ा सिद्धांत बता रहे थे महाराज हमारे जैसे भक्तों के लिए, जो अपनी सेवा में अपने पद के चलते कई बार अहंकार में आ जाते हैं। तो महाराज बता रहे थे कृष्णा डजंट अलाउ, कृष्णा डजंट टॉलरेट हिज डिवोटीज टू कम इन द फॉल्स इवेंट। सो फिर से वो मुशिका बना देते हैं, मुशिका बना देते हैं। So that way Maharaj was very humorous, Maharaj was so lively, Maharaj was welcoming always। अब मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि मेरे परिवार में मेरी बेटी जो है उसके सास और देवर दोनों ही महाराज के शिष्य रहे। तो महाराज के विषय में काफी हम लोग सुनते रहते थे, डिस्कस करते थे। तो आई एम रियली लाइक प्रेइंग इन द लोटस फीट ऑफ कदम कानन महाराज। कल आप सबने चेहरा देखा होगा महाराज का, समाधि में जाने से पहले महाराज का चेहरा एकदम शांत, एकदम प्रफुल्लित, कोई भी नो साइन ऑफ साई और पेन और एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। सो वैसे महाराज के चरणों में हम सब प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से आपका महाप्रयाण हुआ, इसी प्रकार से हम लोग भी जीवन पर्यंत आपके पदानुगमन करते हुए गुरु महाराज की सेवा करते रहे प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, और अंत में हम सबका भी ऐसे ही डेस्टिनेशन हो जब हम लोग पूरी तरह से भगवान के नाम का आश्रय ले सकें। थैंक यू वेरी मच पद्माली प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत कदम धन्यवाद। कानन स्वामी महाराज की जय। बहुत धन्यवाद श्रीमान हरे कीर्तन प्रभु। Now I would like to request His Holiness Shri Krishna Chaitanya Maharaj to kindly give his offering. Om Jnanachanandasya Vinanjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. So thank you Padmamali Prabhu and Guru Maharaj for this opportunity to glorify His Holiness Kadamba Kanana Swami Maharaj. So Maharaj, we have a parallel Hindi transcription, so you can go on in English. Okay. So I'm here in Tirupati. We're having the Tirupati South India Mega Youth Festival. There's 2,000 youth here. It's a very ecstatic festival. E.S.Lokanatha Maharaj is also here. There's 14 senior devotees, 6 sannyasis, 2,000 youth. It's wonderful festival going on. And we had a great Balaji Darshan yesterday and press conference and ecstatic atmosphere. And this is what the Krishna consciousness movement is about. And we have wonderful devotees like His Holiness Kadamba Kanana Maharaj that make history and give us inspiration to move forward in the Sankirtan movement. And they give great happiness and joy to the devotees.
I remember the first time I met Kadamba Kanana Maharaj was in Vrindavan. He was the temple president there. And every Sunday he would lead the Gaur Artik. And he would lead the Gaur Artik in the evening for around 3 hours. And it was fully ecstatic. And the Gurukul boys, they were all dancing and chanting. It was really wonderful. And he told me, I don't get warmed up until 2 hours into the kirtan. Maharaj was known for his amazing kirtans. He was one of the amazing kirtan singers of ISKCON. Another time I was in Paris with His Holiness Lokanath Maharaj, and Kadamba Kanana Maharaj was also there at ISKCON Paris in France. And then Maharaj, Kadamba Kanana Maharaj was leaving for another program and by flight, and he woke up at 12 o'clock at night and he chanted all of his rounds before leaving for the airport. And he told me that I always like to chant my rounds before traveling. So I was very impressed. He's so dedicated that he'll give up his sleep in order to do his sadhana nicely before going and preaching. So I was very inspired by this because we need to chant nicely so that we can preach nicely and become free from Maya, because Maya is very, very strong. Devi Esha Gunamayi, Mama Maya Dharataya. So Kadamba Kanana Maharaj, he was in the same mood that he needed to fill up his bhakti gas tank with his chanting, with his japa. He was very serious chanter of japa and very serious sadhana. Only before doing his sadhana, only then he would travel, only then he would preach. So even if it meant waking up at 12 o'clock at night, he would do his sadhana first and then travel. Recently, I also spoke with Maharaj once quite intimately, and he was saying that he had a very special situation because the GBC gave him sannyas very easily, and also they made him a Diksha Guru, even though his Diksha Guru, Param Puja Jai Advaita Maharaj, was still on the planet. So he was offering Diksha with his Guru still on the planet. And now his Diksha Guru is still on the planet, Jai Advaita Maharaj. And Kadamba Kanana Maharaj had a very unique situation that he left his body in the association with his Guru, Jai Advaita Maharaj, and so many wonderful Vaishnavas chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So he left the planet in the association of so many devotees, including his Diksha Guru, chanting and dancing with him. And when I was going for sannyas, when I was on the sannyas list, Kadamba Kanana Maharaj was also part of the sannyas ministry. And Kadamba Kanana Maharaj was very encouraging to me. I just conclude by remarking that I was there in Vrindavan in this Kartik with Kadamba Kanana Maharaj, and we were sitting together in a Bhagavatam class, listening to His Holiness Jai Advaita Maharaj. And at the end of the class, I had a question, but I was a little shy about asking my question, and the other devotees were asking questions. And then Kadamba Kanana Maharaj said, don't be shy, ask your question, go ahead, be bold. So I took this instruction, I asked my question, and I will take this as an eternal instruction from Kadamba Kanana Maharaj. Don't be shy, be bold, and preach Krishna consciousness. His Holiness Kadamba Kanana Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you so very much, Maharaj, for that beautiful offering. Now we would like to request our dear God Brother Vaikuntha Murthy Prabhu, all the way from Mauritius. Vaikuntha Murthy Prabhu की महाराज जी का काफी नजदीक से संग सानिध्य, काफी मार्गदर्शन भी प्राप्त किए हैं, तो हम उनसे श्रवण करेंगे। वैकुंठ मूर्ति प्रभु।
Hare Krishna. Om Gyananandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, my most humble obeisances to the lotus feet of Guru Maharaj and all the assembled devotees. Thank you very much for this opportunity. I met Kanabhakana Maharaj for the first time 18 years ago. That was when I was in Cape Town in South Africa. I was studying there as a student, and in between then and now, I met Maharaj again. I didn't have a constant association with Maharaj, but it was sporadic association with gaps in between. So I was with Maharaj in 2005, and then 2007, and then 2009 in London, 2012 while I was working on Braj Mandal Darshan in Vrindavan, and then after that, after around 2018 March, I met him again in Mauritius. He began to travel to Mauritius because he began to give initiation to disciples here. And my main, I would say, well, a few things I remember about Maharaj. He was very kind to me from the very beginning, actually. I remember when I met him for the first time, I had some questions actually about the chanting of Japa, and he had just finished a Bhagavatam class, and he invited me to his room, and very kindly he answered the questions that I had. And I remember an instruction he gave me then, which was not just specific to me. It was something he said quite often in his lectures. He spoke about the chanting of Japa as an offering to Krishna, just like we offer different things to the Lord, like offering of bhoga or other things. So Maharaj was saying, you can also think of your Japa as an offering, and therefore, if you think that this is something I wish to offer to the Lord, and for him to accept it, I have to do it nicely. And then he said, then that can become an inspiration, an impetus to make an endeavor to chant over Japa very carefully, very attentively. I would say by far my main connection with Kadambakana Maharaj has been through Kirtan, and it's been a very unique experience from the very beginning, right until the last moment the last time I was able to be with Maharaj in Kirtan. The very first time I remember was it was the Sunday feast in Cape Town. I was sitting a little bit further at the back. I was a little shy. I didn't know Maharaj so well, so it's the first time I was with him in Kirtan. So there was one devotee sitting. I'm not sure if there was somebody in the front. Anyhow, I was sitting some distance away and was playing Mridanga for Maharaj. And he called me to the front to sit right next to the Vyasasan to play Mridanga for him. So he was singing, and then of course, like in Kirtan, it's call and response. So while the audience is responding, Maharaj, he looked at me and he said, I want more life in the Mridanga playing. And then that set the tone for all the years to come. Whenever I played Mridanga for Maharaj, that was the experience. As we all know that Maharaj, his Kirtans were extremely intense. In every way, Maharaj's Kirtan was really, Maharaj was calling out to the Lord with everything he had. And if you were in Kirtan with Maharaj, serving him, I would say specifically, I think the experience is different if you're just attending Kadambakana Maharaj's Kirtan and singing along or dancing. You have a different experience. But if you're serving Maharaj as a musician, as I would say specifically as a Mridanga player, you have a different experience. It is purifying in a different way, in an extremely intense way, actually.
because Maharaj, when he sings, when he did kirtan, he would give himself 108%. He wouldn't. Sometimes we think we're doing devotional service. We think, what's in it for me? Mere liye kya hai isme? Yes, I'm serving the Lord, but is there something in it for me? Maharaj's mood was not like that. He was 108% completely, totally sold out. For him, everything for Krishna, nothing for me. That was his mood. And he did kirtan in that spirit. And if you play mridanga for Maharaj, then there's no way you can actually play mridanga for Maharaj without trying to imbibe the same mood. It's not going to work. You won't survive, basically. And surviving is a surviving is a good word, because this is in the words of Karambakana Maharaj himself. He said, they call me the mridanga player killer, which in some ways, physically, that was the experience you had. Harmoniums also wouldn't last very long in Maharaj's hands. After a harmonium has been played by Karambakana Maharaj, the harmonium needs to go in for repair. Something got busted, the pump or something of the harmonium needs to be fixed after that, because that's how intense Maharaj's kirtans were. So when you played mridanga, it was like that. Characteristic, you would say, experience of playing mridanga for Maharaj is you would always come out of the kirtan with some kind of injury. You never come out of kirtan the same way you go into the kirtan. Something's always damaged with your body after you finished kirtan with Maharaj. So I got to play mridanga like this for Maharaj a few times, and then especially when he came to Mauritius. So we had several kirtans in a row, and it was just something normal. After you finish, your hands are split open, bleeding. In fact, I have a picture with Maharaj and one of his disciples, Vyasa Krishna Prabhu, Maharaj and myself. So, after one of Maharaj's very, very ecstatic kirtans, the next day I went to see Maharaj. We were speaking, and we were actually speaking about this. Maharaj was joking about it. And then we took a picture together to illustrate. I have to find the picture. So it's Maharaj standing in between, Vyasa Krishna Prabhu the other side, and Maharaj is in the middle, and he's smiling very widely, and we are both on each side of Maharaj, and we're showing our injuries. My hand is completely bandaged up because it's torn open by playing mridanga. Vyasa Krishna Prabhu's fingers are in tape because of playing wampas, and we're showing off our injuries to the camera, and we took a picture of Maharaj in between. It's a very nice picture. And then again, what I remember from Maharaj also, there's so much that can be said, but his mood was very down to earth, very, he wasn't actually very big on formalities. Of course, there's the etiquette, but Maharaj also very kind, personal, and approachable, and he would deal with also us in that way. Very down to earth. When he saw me in London, he just, was like, well, how do you like it here? Do you like this country? Do you like being here? Like that. And even in Mauritius, Maharaj loved Rath Yatras very much. He likes to say, the reason why he loved Rath Yatra so much, it's a very dear festival to him, is because he said, because Lord Jagannath can accept unlimited service through Rath Yatra. And that very much was the mood of Karambakana Maharaj. He wants to offer unlimited service. So I remember playing again for Maharaj during Rath Yatra. We're playing the smaller drum, which is like, it wasn't mridanga, it was like the dholak type thing, which is very small, which they play on Harinam and the Prabhu plays. So I got that to play during Rath Yatra, which is different from mridanga. So it's not your normal position. So I, again, of course, as usual, I ended up straining something in my shoulder, and then it took a whole week to get better, to heal. And that was quite normal with Maharaj. But he was very kind. So after that, he put his arm around my shoulder like a friend. And he said, thank you for playing. So he would appreciate it. And that's something I remember very fondly about Maharaj, is it was very
it was very warm being in Maharaj's association and serving Maharaj. And there's so much more that can be said, and there's some instructions also that Maharaj gave me with regard to kirtan, but I want to keep it short because there's a limited time. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you very much, Padmamali Prabhu, for giving us the chance to say something about Maharaj. Param Puja Srila Kanambakana Swami Maharaj Ki Jai. Thank you so much, Prabhuji, for that sweet memories and sweet offering. Now we would like to request her Sakhi Vrinda Mataji to unmute and speak. तो सखी वृंदा माता जी के घर महाराज जी काफी बार मॉरिशस में रहे हैं और वहां रहकर महाराज जी ने काफी माता जी को उनके परिवार को संघ सानिध्य और विशेष इंस्ट्रक्शन गाइडेंस भी दिए हैं। फिर हम सखी वृंदा माता जी सुनेंगे और तत्पश्चात श्रीमान केशव प्रभु। Hare Krishna, dear Gurudev and dear devotees. I would like to thank our dear Gurudev for always blessing me to serve devotees. And with his blessing, I'm going to talk a bit about His Holiness Kadambakana Swami Maharaj. Maharaj always had a sensitive health, but despite his weak health, he was very strong in his sadhana. After heavy kirtan, the next day, he will be the first person to wake up in the morning and start chanting. He would wake up before all the Prabhu staying the same floor. And his chanting was as sweet as his kirtan, because all the holy name, he was pronouncing it very slowly, sweet, and we could listen. All the Mataji were staying downstairs, we were chanting downstairs, so we could listen to his chanting clearly. Around 15 devotees were staying in the same house, and some 20 devotees in the same village. So we were around 40 devotees, 30 to 40 devotees the whole day. Yeah, every day it was like a festival. And Maharaj liked this mood very much because he was always telling that this is Vrindavan. Wherever we have devotees, we have prasadam, we have kirtan, we have holy name. This is Vrindavan. And Vrindavan is not a place, it is a consciousness. All of us should have Vrindavan consciousness. He was very much attached to Vrindavan because he always mentioned Vrindavan in whatever he was talking. He also has a very charismatic personality, always attracting people around him. And he was always attracting the youth in the island. And he has a very sweet dealings with all the devotees, especially the new one, who would tolerate them a lot, listen to them. And during his visit, he was giving lots of personal time to his devotee, to his disciples and well-wishers. At least once he would give 30 minutes of appointment once to everyone. He would listen to them and try to guide them as far as possible. Once he also has a very merciful character. Once there was a disciple, he was having problem to pay his university fee. And Maharaj proposed him to pay the fee. Like this, he was helping devotees, not only that is spiritual guidance, but in whatever way he can. He was very strict in following Srila Prabhupada principle. He said that we should never compromise with the principle. And he was himself very strict. Despite he had a very sweet dealings, he was very personal in his dealings, but as far as principle is concerned, there was no compromise. There was always a servant present in his room whenever he was receiving devotees, whether it be Prabhu or Mataji. And he has a very strong personality. Whenever he talked to me, he always says that I should be fearless. I should never be afraid, because at that time I was new in serving sannyasis, so I was always begging Maharaj for his blessing. And he would always tell me that you should be fearless in serving. You should be fearless in whatever you are doing.
because Krishna is the only protector and the only doer. And he promised us to come again and again whenever he would come to Mauritius, but he would always write us, telling us that he would come soon. And in our house there is a garden inaugurated by him. And I told Padmamani Prabhu that we'll show the garden. And Maharaj did lots of program here, morning class, during his last visit when he came. So this is a roof garden inaugurated by His Holiness Kadamba Swami during his last visit to Mauritius. And this garden, we have used it more than the temple during the COVID time. I'm showing the garden life there. So I would like Gurudev and His Holiness Padmamani Prabhu to give him the opportunity to talk about Maharaj, and I pray that I always have this chance to serve devotees. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, for sharing the nectar and insights about His Holiness Kadamba Swami Maharaj and your beautiful home, Jagannath. Thank you so much. Thank you, Prabhuji. केशव प्रभु अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी कदम्ब कानन महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कदम्ब कानन स्वामी इति नामिने। महाराज के साथ हम यूरोप में ब्राजील देश, वहां पर अपना इस्कॉन का बहुत बड़ा लैंड है, उनका नाम है राधा देश। वहां पर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गुरुदेव जी के साथ उनका हमें दर्शन हुआ। वहां पर बहुत स्पेशल प्रकार से उत्सव मनाया जाता था और विशेष करके वहां पर होली का उत्सव बहुत ही स्पेशल होता था। तो वहां पर ऐसा एक स्पेशल ग्राउंड था और उसमें कदम कानन महाराज जी, हिज होलीनेस कदम कानन महाराज कीर्तन गाते थे और सभी विदेशी लोग अलग अलग प्रकार से कलर के साथ, पानी के साथ होली खेला करते थे। तो और बड़े विशेष प्रकार से महाराज का कीर्तन होता था। सब भक्त और नए लोग एक साथ डांसिंग भी करते थे, होली भी खेलते थे। उसके बाद बड़ा ही आनंद आता था। तो हमें पता है कि होली के 2 दिन बाद ही महाराज खास कृष्ण के रंग में, राधा रानी के रंग में रंग गए और वो गोलोक धाम चले गए। वही दिन था जब हमारे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव, जिसका नाम है तुकाराम बीच, उस दिन हम भी देव गए थे और लाखों लाखों लोग महाराष्ट्र में कीर्तन कर रहे थे और सभी लोग भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन के साथ तुकाराम महाराज जी का भी जो स्पेशल टाइम है 12 बजे, जिस समय वो जो पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो कीर्तन करते थे, वो पेड़ आज भी हिलता है और स्पेशल लोगों को साक्षात्कार होता है कि तुकाराम महाराज जी भगवत धाम चले गए हैं। उनके लिए स्पेशल पुष्पक विमान आया था और उन्होंने भी उस पर बैठकर अपने वैकुंठ धाम की यात्रा की थी। उसी प्रकार हमारे प्यारे महाराज कदम्ब कानन महाराज भी उसी समय, वही तिथि पर और वही तुकाराम महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भी मृत्यु को विजय करके वो लोग धाम की प्राप्ति की है। महाराज का कीर्तन सबके लिए बड़ा ही मधुर था। बाकी होली में के बाद दूसरे दिन महाराज जी क्लास दे रहे थे और महाराज निरंतर नाम ले। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी उनका क्लास बैठकर सुनते थे
परंतु महाराज का नाम में इतना रुचि था कि वो नाम बंद ही नहीं होता था। जैसे तुकाराम महाराज हर जगह जाते थे, उनका नाम कभी बंद नहीं होता था। अब तो आपको तो पता ही है कि तुकाराम महाराज जब विष्ठा के लिए बाथरूम टॉयलेट लेके लोटा लेके भी जाते थे, तभी उनके मुख से नाम निकलता था। और जब कोई नाम बंद करने के लिए मुख बंद करता तो उनके रोमांच से विठ्ठल 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 सब नाम आता था। उसी प्रकार हमारे प्यारे गुरु महाराज, इनका नाम कभी बंद नहीं। तो महाराज नाम जब भी कर रहे थे, और महाराज दिव्य है, वो कुछ भी कर सकते, वो क्लास भी सुन रहे थे। तो कदम कानन महाराज कहे कि ये साधु है, निरंतर नाम लई। तो इस प्रकार दोनों महाराजों का अत्यंत विशेष घनिष्ठ प्रेम था। और कीर्तनीय सदा हरि, इस प्रकार वो हमेशा कीर्तन में लगे रहते थे। अंते नारायण स्मृति, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, अंत में हमें नारायण की स्मृति, कृष्ण की स्मृति, राधा रानी की स्मृति प्राप्त करना, यही जीवन है। और उसी धाम में, रमन रीति में, उधर ही उन्होंने अपनी अंतिम लीला में प्रवेश किया है। तो ऐसे महाराज को हम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसे हमें भी शुद्ध भक्ति, प्रेम, कीर्तन, भागवत साक्षात्कार प्रदान करे। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य कदम्ब कानन स्वामी महाराज की जय। समवेत भक्त विंद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। बोल प्रेमानंदे हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। नाउ वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिज ग्रेस सुंदराचल प्रभु, सखी वृंदा माता जी के पति है प्रभु जी, और उन्होंने भी महाराज जी का काफी संग प्राप्त किया है। सुंदराचल प्रभु। Yes, Hare Krishna, Guru Maharaj, Hare Krishna, dear Vaishnava devotees. I am in Rodrigues Island for about 2 months, so we'll stay for 6 months here, and trying to struggle with my devotional life going on. But His Holiness Kadamba Maharaj, he was someone very special, like his managerial skill. Whenever he will speak, this, I am manager, so I know everything. So I was, when he was at our place, I used to drive. He didn't want that change his driver, so he told that only one driver. And then when I was driving him, I asked Maharaj, so why you choose me as your driver? So because he told me that because you're an air traffic control officer, so your vision and your sensors are very active, like your reaction time. So I will be safe in your hands. So that's why I chose you as a driver. So that's like he used everything he used to plan, and he has explanation for everything. And as I was driving him, he went for a Rath Yatra, and after the Rath Yatra, he was returning back, and I asked Maharaj, you have sung for like 3 hours more, so how do you feel? What is your feeling after having sung so many hours of kirtan? Then Maharaj didn't tell me anything. He just smiled, and later, or 2 or 3 days afterward, in Shri Krishna Balaram Mandir, he gave that answer to like 200 devotees were there, and he said that it is his service. So whatever Krishna wants, he it is service to sing. So for him, it is no like any. It's normal to sing. So this and as Sakhi Vinda was telling that he was very like strict in his sadhana bhakti. And once one of his there was four brahmacharis staying next to his room, and they have overeaten, so their stomach was not good. So he was very like caring. He went in their room and checked they have eaten something, or then he
then he gave us he gave us instruction what they should eat, what should be given to them, and he was so caring, you can see. And whenever he woke up early in the morning, he will not tell that way that person they have not waken up. He said that if they are tired, let them rest. So he was not like pestering to should wake up early. He was very humble. So we really missed his wonderful association. So that's all. Hare Krishna. थैंक यू सो मच सुंदर सर प्रभु। समय लगभग हो चुका है, तो फिर भी 2 भक्त हैंड रेस किए। रत्नमालिनी चित्रा माता जी, कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक माता जी? हैंड रेस किया है, रेज योर हैंड। रत्नमालिनी चित्रा माता जी फ्रॉम यूएसए, इफ यू आर विथ अस, यू कैन हियर मी, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक? Shamalangi Mataji, you Hare can Krishna. go ahead. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances, Guru Maharaj, and to all the Vaishnavas and Vaishnavis. Thank you, Padmamali Prabhu. तो एक्चुअली हिज होलीनेस कदम कानन महाराज काफी बार दुबई आए हैं। कई बार शॉर्ट विजिट भी होता था उनका 1 दिन का, बट एक समय का है जब वो अपनी स्पेशली अपनी एक डिवोटी अपनी एक शिष्य को मतलब दीक्षा देने के लिए वो स्पेशली आए थे माता जी को। अभी वो वृंदावन में ही रहती हैं, पहले दुबई में थी, तो स्पेशली ही पास्ट ही केम टू दुबई टू गिव इनिशिएशन टू हर। तो उस समय मुझे महाराज का काफी संग मिला। महाराज ने कुछ होम प्रोग्राम्स किए, उनके लेक्चर्स इतने अच्छे होते थे, कीर्तन जैसे कि हम सब जानते ही हैं, अमेजिंग रोरिंग कीर्तन्स। और जैसे कल उनके एक डिसाइपल भी बता रहे थे कि उनकी सुबह की जो सेवा होती थी अपने गिरिराज के लिए, तो ये हमने भी देखा, हमें दर्शन कराते थे वो अपने गिरिराज के और सुबह उठ के उनकी सेवा करते थे। एंड ही वाज वेरी हैप्पी इफ वी वुड कुक फॉर हिज गिरिराज। तो जिस दिन उन्होंने ट्रैवल करना था तब मैंने उनके गिरिराज के लिए पराठास बनाए थे, तो बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। और हम उनको फिर एयरपोर्ट भी सी ऑफ करने के लिए गए थे। तो जैसे हम अपने गुरु महाराज को भी कई बार एयरपोर्ट सी ऑफ करते हैं, तो महाराज हमें जब तक देख सकते हैं देखते हैं, ही वेव्स हिज हैंड। सेम थिंग वाज विद कदम कानन स्वामी महाराज, जब तक वो हमें देख सकते थे, यू नो, ही वाज लुकिंग एट अस, स्माइलिंग फेस, वेरी जॉली। बहुत उनका नेचर ऐसा था कि वो हंसाते थे, ही वाज वेरी जॉली। एंड थोड़ा सा दुख है कि उनसे मैं वृंदावन में इस बार कार्तिक में नहीं मिल पाई, क्योंकि हम अपने गुरु महाराज की यात्रा में गोवर्धन पे थे, तो एक ही दिन थी मैं वृंदावन में। हालांकि मैंने उनके पर्सनल सर्वेंट से बात भी की थी, ही इज ऑल्सो फ्रॉम दुबई, ही इज वन ऑफ द यूथ्स एंड ही वाज सर्विंग गुरु महाराज। अभी वो महाराज के पास ही वहाँ पे सेवा कर रहा है। मैंने उससे पूछा भी था, तो उसने कहा था हाँ आप आ सकते हो, बट समहाउ आई कुडंट जस्ट गो फॉर दैट। हमें यहाँ पर महाराज की डेली रिपोर्ट्स मिल रही थी। उनकी कुछ और शिष्यां हैं, 2 मेरी अच्छी फ्रेंड्स है, एक अभी वहीं पर ही है वृंदावन में, यहाँ से गई है वो स्पेशली कुछ दिन पहले, और एक जो यहाँ पर है उसके घर पे भी रोज कीर्तन हो रहा था अभी 1 हफ्ते से। तो हमें डेली रिपोर्ट्स मिलती थी कि किस तरह से महाराज जो हैं, अभी उनका लास्ट मैंने कल एक यूट्यूब पे उनका वीडियो देखा जो 11 फरवरी का है, उनकी जो वीकली जूम मीटिंग वो अपने डिसाइपल्स के साथ करते थे। तो 11 फरवरी के बाद मैंने नहीं देखा, बट हमने देखा कि किस तरह से जब महाराज को खबर मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो उनके थे, जैसे जहां जहां उनको जाना था, न्यूयॉर्क रथ यात्रा में, यूएस में कहीं साधु संघ फेस्टिवल था, वो सब उन्होंने अटेंड किया। उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो वृंदावन ही आएंगे, और यहाँ पर आके भी वो सबसे पहले अपने सारे शिष्यों को परिक्रमा पे ले गए। You know, like he just maybe wanted to fulfill, like he wanted to give more time to his disciples. तो सबसे पहले वो उनको परिक्रमा में भी ले गए वृंदावन की, वो सब उन्होंने किया। फिर जिस तरह से वो वीकली जूम मीटिंग्स करते थे, फिर उनकी रिपोर्ट्स अभी आ रही थी, तो लास्ट में आ रहा था कि किस तरह से अब वो खाना नहीं खा पा रहे, ही वाज ऑन कोकोनट वाटर एंड वाटर, फिर धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। बट सी, ही नेवर वेंट टू एनी हॉस्पिटल, he never went for any treatments to prolong his life. He just accepted Krishna and he embraced his end, like art of living and art of leaving. So उन्होंने हम सबको ये सिखाया, सब लोग ये बात बता चुके हैं। I just wanted to share कि किस तरह से मुझे भी उनका संग मिला था। I couldn't host him, but I used to tell him, Maharaj, I really want you to come home. अभी कोविड आ गया बीच में, उस वजह से भी उनका कम हो गया था, बट जो भी मिला, he was a very unique, he was very sweet. So all glories to his glorious preaching. His Holiness Kadam Kanan Swami Maharaj ki jai. Thank you, Padmamali Prabhu. Hare Krishna. थैंक यू सो मच माता जी ऑफरिंग। और सभी भक्तों का हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने आज परम पूज्य श्री कदम कानन स्वामी महाराज को एक प्रकार से हमारे बीच पुनः प्रकट किया।
या पुनः हमारे बीच उन्हें लाए। अब सभी भक्तों का हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आज के सत्र को हम विराम देने से पहले एक दो अनाउंसमेंट्स है। नागपुर से हमारे गुरु बहन है जपा माता जी, तो उनके पुत्र का कल दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हुआ है और उनकी सास ने आज देह त्यागा है, तो काफी डिस्टर्ब है माता जी। तो माता जी कहे कि जूम पे सभी भक्तों से गुरु माता जी से विशेष प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद दें, ताकि वे अपनी आध्यात्मिक सेवा और आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील रहे। और साथ ही में इसको अमरावती की ओर से एनुअल 1 डे वैष्णवी पद यात्रा होती है, 1 डे पद यात्रा, तो आज उसका 4th एनुअल पद यात्रा है। तो आप में से जो भक्त नागपुर, अमरावती या आसपास के क्षेत्र में है, तो जय भद्रा माता जी से संपर्क करके जरूर उसमें सहभागी हो सकते हैं। इसी के साथ अब हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं। कल पुनः गुरु माता जी के सानिध्य में हरे नाम जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्रील कदम कानन स्वामी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।